So what is cultural parallel? Means that is similarity of the cultural traits when we compare different culture and societies. What are the similarity of the cultural traits when we compare the culture and society? These are cultural parallels. These cultural parallels are become because of the psychic unity of mankind. So different culture and society. Suppose the society 1, the society 2, they have different culture, culture 1, culture 2, and we compare different society. We find similarity of cultural trait. For example, यहाँ पे घड़ा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे घड़ा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी है नहाने के लिए अलग से बाथरूम है, यहाँ पे अलग से बाथरूम है. सो दिस सिमिलरिटी ऑफ द कल्चरल ट्रेट. अब when we compare different society, when we are comparing society 1 and society 2, these culture parallel are because of the psychic unity of mankind. So classical evolutionists, they follow the historical approach. Their approach was very much different from Franz Boas approach. जैसे classical evolutionists, they follow the historical approach. Franz Boas, archaeologist and many biological, they all follow that historical approach. The classical evolutionist historical approach is different from Franz Boas historical approach. The classical evolutionist historical approach depend on the secondary sources of data collection. From the classical evolutionist based on secondary source of data collection, mostly history and literature, and based on which they generate culture history maps. So based on the secondary source of the data collection, they generate culture history and map. On the other hand, if we talk about the Franz Boas, it is based on museum methodology. So Franz Boas, there is a based on museum methodology, and archaeologist, dating method and geological times, and this is microbiological. This is DNA examination, genetic study, that is homo-neanderthalensis. So what are the approaches used? Historical approach, comparative approach, and method of rethinking. Talent used this method extensively. Method of rethinking. Thinker thinking that way of primitive man must have thought. So method of rethinking means बैठ के थिंक कर रहे हो कि प्रिमिटिव मैन कैसे सोचता होगा. जैसे प्रिमिटिव मैन के तरीके से सोचने की कोशिश करो, तो थिंकर थिंकिंग द वे प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव थॉट. तो हिस्टोरिकल अप्रोच होगी, हिस्ट्री देख रहे हो, कंपैरेटिव अप्रोच कंपेयर कर रहे हो, एंड मेथड ऑफ रीथिंकिंग टैलर ने काफ़ी यूज़ किया था, ये भी टैलर ने. थिंकर थिंकिंग द वे प्रिमिटिव मैन मस्ट हैव थॉट. So he is Louis Henry Morgan from 1818 to 1881. He was from America. Louis Henry Morgan 1818 to 1881. तो 88 आ रहा है इधर भी 1880. So यहाँ पे 1818 to 1881. Louis Henry Morgan. So concept of survivals, that is L.H. Morgan. लीगल फिक्शन, देखो रेलिक बोला है एल.एच. मॉर्गन ने सर्वाइवल्स को, लीगल फिक्शन बोला है इन्होंने हेनरी मेन ने. A COVID, that is revoking supernatural when sneezing. Fictional critic. तो revoke का मतलब होता है cancel someone that is no longer valid. तो revoking supernatural while when sneezing, मतलब आप जब छींक रहे हो तो आप revoke करें supernatural. तो एक क्या है ये सर्वाइवल है कि आज भी प्रैक्टिस यूज़ होती है जो पुरानी यूज़ होती थी. कोविड होता है, कोविड इज मेल इनैक्टिंग लेबर पेन ऑफ द पार्टनर. तो फर्स्ट केम evolutionists. According to them, every communities of the culture have same evolutionary sequence because psychic unity of mankind. Every culture group evolved independent of one another. Criticizing these people came diffusionist. According to them, man always borrowed from others. Man is uniministic, and so man is largely borrowed from the inventor. According to them, man is uninventive, so man is largely borrowed from others. So man is uninventive, so man borrow from the others. So diffusionists criticize evolutionists. According to them, that man always borrow from the other. Man is uninventive, so man largely borrow from the inventor. Then Franz Boas came. According to him, there was a mix of inventors and borrowers, so it can be generalized. You cannot generalize that you have borrowed everything and you have invented everything. Every culture has to be studied in its own sphere. It is said by Franz Boas. तो फ्रांस बोआ जो बेफिन आइलैंड में गए थे, एंड देन मेलिनोस्की कम. अकॉर्डिंग टू हिम वन शुड स्टे अमंग द पीपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम. तो मेलिनोस्की ने बोला कि उनके साथ रहना चाहिए. तभी ये कहाँ पे गए थे? ट्रॉबी अंडर आइलैंड में गए थे. फॉर हिम हिस्ट्री इज नॉट ऑफ हाई सिग्निफिकेंस. फॉर हिम कल्चर हैज़ टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन वॉट इज द यूज ऑफ एंटिटीज इन द कल्चर. दैट इज कल्चरल ट्रेट्स. दैट इज मेलिनोस्की से फंक्शनल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए जो भी कल्चर को ऐसे समझना चाहिए कि उस एंटिटी का यूज़ क्या है उस कल्चर में. तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव पे फोकस करते हैं मेलिनोस्की.